what do you give to the customers or the buyers as compared to the other competitors and developers in the market of real estate? Yeah. So just again beating ourselves, we have every month we have one meeting which we call Manthan meeting. Manthan meeting. Yes. Any reason why Manthan? Samudra Manthan? Yes, because in fact मैंने थोड़ा I like I'm a very sensitive person. Being a creative person, I'm a sensitive person. And I always believe that if we connect to our mythology, it always helps you to get the best out of you, because there is a story which has already happened in ancient times, which you just have to repeat times. Right. So everything in our company has names of Mahabharata. So Mahabharata or something to do with Ramayana, or any previous mythological things which we have seen and we have grown with. So Manthan meeting is like that. Like for example, our sales team में जो हमारे sales लोग करते हैं, उनको हम सारथी बुलाते हैं. But Sarthi plays a very important role and the prime role in this. Absolutely. So ये मंथन मीटिंग इसलिए होती है कि हम ये देखते हैं कि लास्ट प्रोजेक्ट में जो चीजें हमने की, हम क्या ऐसा बेहतर कर सकते हैं कि हमारे जो अतिथि देवो भव है, हमारे जो क्लाइंट्स है, उनकी लाइफ में हम क्या ऐसा एक अच्छी चीज ला सकते हैं जिससे our this project has given a better facility than than our previous project. Just एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. In 2020 में एक हमारी मंथन मीटिंग में a beautiful idea struck me. And again that idea was out of concern towards our clients, that is our flat buyers. कि बॉम्बे रियल एस्टेट में I suddenly realized that we sell per square feet. बॉम्बे में कहीं भी आप सबब में जाइए 25 to 30,000 मिनिमम रेट हो रहा है. एटलीस्ट उतना तो चल ही रहा है. एब्सोल्युटली. एंड इमेजिन ये जो स्क्वायर फीट रेट है, उसमें जब हम डिजाइन करके फ्लैट्स लोगों को देते हैं, तो उसमें से 15% एरिया हमेशा डिजाइन में पैसेजेस में वेस्ट जाता है. राइट. So just imagine करिए 15,000 multiplied by 25,000. Almost it comes to around I would say whooping area. अगर आप फ्लैट आपका 500 स्क्वायर फुट का अगर लेते हो, तो 25 to 30 लाख क्लाइंट का वेस्ट जाता है वो स्पेस में. But the client never realizes this. उसको लग रहा है वो घर के अंदर ही है. Absolutely. वो मेरा घर का पार्ट है. Absolutely. And when उसकी सोच जब इस डेप्थ पे जाती है, या उस डेप्थ पे हम अगर जाते हैं, एंड हम उसके लिए एक ऐसा काम करते हैं जिसमें पैसेज फ्री हाउस उसको देते हैं, और जो बचा हुआ एरिया 15% वो हम उसके अगर किचन में बढ़ाते हैं या बेडरूम में बढ़ाते हैं. इमेजिन, डोंट यू कॉल दैट एज वैल्यू फॉर मनी? आई थिंक दे विल पुट योर पिक्चर इन द देवारा once you start delivering this, because I don't think any developer thinks like this. Absolutely. मंथन मीटिंग में 0 पैसेज का फंडा निकला. उसी की वजह से currently we have launched 10 lakh square feet in Oshivra. That is almost 18 months back, जहाँ पे हमने 0 पैसेज का ये पहला डिजाइन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. And you'll be surprised that in 18 months we sold 800 flats. Just in 18 months. Yes. Okay. And purely the entire credit goes to this thought and the depth at which we went to this thought. One more very small thing which we are going to now do in a project we are launching in Chembur by the name Raya. We are soon coming to Chembur. That's the name of the project. Absolutely, yeah. Okay. So वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा मंथन मीटिंग में यूनिक आइडिया लिया कि जो बालकनीज की रेलिंग्स है, वहाँ पे we have created a design जहाँ पे जो रेलिंग का रॉड होता है वही क्लोथ सुखाने के लिए एक एक्सटेंशन बन जाता है. Such a small thing. Exactly. But आज की तारीख में बॉम्बे में people don't know where to put their clothes up, you know. Either they have a separate area. Again, the same thing कि वो space भी आपके घर का part बन जाता है. Absolutely. Then your space is gone and it's wasted. But this is such a beautiful thought. Yeah, and whenever they're done with the clothes drying, it just folds up to become a railing. Wow. So these are such small things we keep on. मतलब there are millions of it, you know. मतलब Mumbaikars might be surprised कि इतनी सारी चीजें हो सकती है. These were a couple of things which I conveyed you, which really, you know, I think slowly, steadily are value adding to our product one by one.